Hi everyone, good evening and welcome to this session on admission counseling process and of course the NLU preferences for CLAT 2025. Now definitely this session is for students who have been invited for the counseling for admissions to the national law universities through the CLAT 2025 examination. Now, of course, this is not for every student, but those who have received the invitation for the admission counseling process. Now, how do you get to know whether you are eligible for participation in the process or not? Simply log into your consortium CLAT 2025 account and check whether the two tabs, NLU preferences, update NLU preferences, and make the payment for the counseling fee is enabled. So if that is enabled, then you have been invited for the to participate in the admission process of CLAT 2025. Okay, so you are eligible for admissions, but of course it does not mean that you'll be allotted a seat. That will be completely dependent on your rank. Okay, of course they will look at your NLU preference. If your rank is good, and they will match it to the best available option to give you the or allot you the national university. So what I'm going to do in the session is session में करने क्या वाला हूँ, I'll help you understand what should be your NLU preference. Now, of course, the question is, but is it something which I should not decide? Yes, you decide. You are definitely. But when we are talking about the preference of the NLUs, it's not just about something randomly which you might be doing or based on some information. We do this and do this session every year. Every year, thousands of students from LST go to the different national university and other colleges. We remain in touch. We get a lot of feedbacks about the campuses, the processes, the placements, the faculties, everything, the overall environment, the overall academic environment over there. And this ranking is based on all those feedbacks which we have received. Okay, so you need to understand that there's a lot of inputs which has gone to make these rankings, and that's why it's going to be a very useful national law university ranking for you. I'll be talking about, specifically, I'll spend some time about the horizontal reservation for female students, because a lot of female students will be taking admissions. A lot of female students write the examination, so they will be definitely taking admission over here. And they have the benefit of horizontal reservation in 12 national law universities, which means there are specific percentage of seats which are reserved for you. Does not mean that it stops you from the other seats. You are eligible for all 100% of the seats. But in a batch, let's say in a batch of 100 students, 30 is reserved for you. The remaining 70 is also open for you. I'll also spend time help you understand how the NRI sponsored admission process works. So I'll definitely cover that as well. I'll tell you which all NLUs offer the NRI sponsored seats, so that if you are looking forward to apply through the NRI sponsored seat, the rank which could be better than your overall rank of the All India rank, then you can exercise that option, provided you have got your NRI sponsored rank. If you did not mark the yes to the question ki हाँ, will you be considered, do you want yourself to be considered for NRI sponsored category, अगर आपने वहां पर ना किया था तो आपको रैंक नहीं आया होगा. And if you have not received the rank, definitely you will not be eligible for admissions to the NRI sponsored category. Now, a lot of queries come to me ki if one has applied for NRI sponsored category, does that stop me because I've got a rank? Does that stop the consortium to allocate me a national university? Not at all. If your ranks are good, agar tumhara rank acha hai, and that is making you naturally eligible for admissions based on your merit, you will be first allotted a national university through the consortium. And of course, it's your call whether to take admission or not. Actually, that's your call, and you may prefer to go ahead with the NRI sponsored category as well. And of course, I'll be talking in detail about the admission process, the counseling process, which has just been notified,
and activated by the CLAT consortium. तो हम उसके बारे में डेफिनेटली इन डिटेल बात करेंगे. मैं तुम्हें समझाऊंगा कि फ्रीज, फ्लोट, एग्जिट किस तरीके से काम करता है. 5 लिस्ट will be there. So consortium will release 5 allotment lists actually, and how does it move? I'll definitely cover that as well. तो फिलहाल के लिए डेफिनेटली मैं कोई क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट माय सेशन. एक बार कर लेते हैं, समझ लो, अटेंटिव रहना सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा नेशनल यूनिवर्सिटीज पे, तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इस प्रोसेस पे बिल्कुल ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करता हूं, मैं काउंसलिंग प्रोसेस की बजाय मैं एनएलयू प्रेफरेंसेस की बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है सबका एक्साइटमेंट यहां पर की है कि क्या प्रेफरेंस डालना चाहिए. वो तो ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस का इन्विटेशन मिल गया, आई हैव गॉट द इनवाइट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट what should be the preference of my national university in the CLAT consortium website. So I'll start with that itself, and then we'll move on to the admission counseling process. Now please understand, how does the consortium allocate a national university? Rank aa gaya, sab kuch ho gaya, but consortium national university kis basis pe allocate karega? So once you submit your preference, and based on your rank, they will match the best option available, and that will be allocated to you. For example, मान लो तुम्हारा रैंक है फॉर एग्जाम्पल 50 एंड यू पुट NLU भोपाल फॉर दैट मैटर. नाउ ऑफ कोर्स every other student, there could be exceptions, they will put NLS first. So 49 students ahead of you will be given NLS, but because you have shown NLIU Bhopal, you will be allocated because that's your first choice. Okay, so as your rank gets lower, you are also dependent on other students about their preferences. But let me tell you very frankly, preferences बहुत ज़्यादा differ नहीं करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स कई बार अपने अपने तरीके से प्रेफरेंस फिल करते हैं और बाद में रिग्रेट भी करते हैं, लोअर एनएलयू एलोकेट हो जाता है. कुछ लोगों को लगता है कि यार थोड़ा मेरा रैंक कम है, माय रैंक इज लो, लेट मी एलोकेट अ लोअर एनएलयू, आई विल श्योरली गेट इट, बट यू कुड हैव गॉट अ बेटर वन एज वेल, मिड रेंज एनएलयूज. सो pay attention to this fact, because tomorrow you don't want to regret. So your best possible mapping is done based on the preference you will submit through the counseling process, and of course dependent on your rank. Okay, and this will be done category wise. Okay, this will be done category wise. So there is a whole lot of ranks which you must have received if you belong to a particular category. One is all India rank, other one is all India general category rank, and if you are from different categories, similarly, alternatively, you will have those category ranks. Then NRI sponsored rank, female rank, state domicile of course works over here. So first of all, the higher rank candidates choice will be considered. Okay, so अगर NLS Bangalore में 91 seats हैं for general category on all India basis, पहले टॉप 91 स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद ही किसी के प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाएगा. आप कोई भी प्रेफरेंस डालो वो नहीं कंसिडर होगा, पहले आपके ऊपर जो 91 स्टूडेंट्स हैं उनके प्रेफरेंसेस को कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, वंस यू हैव बीन अलोकेटेड अ नेशनल यूनिवर्सिटी, आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जो भी नेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाती है, आपके पास चॉइस होगा, आइदर यू फ्रीज, यू गो फॉर अपग्रेड. अपग्रेड किस केस में? अपग्रेड उनके लिए अलाउ होगा जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस अलोकेट नहीं हुआ है. अगर बाय चांस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलोकेट हो गया है, देन इन दैट केस आइदर यू कैन फ्रीज और एग्जिट, कि एडमिशन नहीं लेना है इस साल, व्हाटएवर द रीजंस कुड बी. सो ऑफ कोर्स टॉप रैंक्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन बचेगा अगर फर्स्ट चॉइस जिसको भी अलोकेट हो जाती है. मान लो प्रेफरेंस 1 पे तुमने जो भी एनएलयू रखा है, अगर वो एलोकेट हो गया फर्स्ट लिस्ट में, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपग्रेड का, तुम या तो फ्रीज करोगे या एग्जिट करोगे. लेकिन जिनको सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस या उसके नीचे वाले प्रेफरेंसेस एलोकेट हुए हैं, वो फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट लिस्ट में अगर वैकेंसी रहती है, उनके ऊपर वाले एनएलयूज जो उन्होंने प्रेफरेंस ऑर्डर में दिया है, दे विल बी एलोकेटेड दैट एनएलयू. तो वो डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर. सो इस तरीके से एक और एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं कि पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है. देन आई एम गोइंग टू रिवील द एंटायर लिस्ट ऑफ द एनएलयूज व्हिच यू शुड बी पुटिंग इन योर अकाउंट टू अपडेट द एनएलयू प्रेफरेंसेस. प्लीज अंडरस्टैंड, एक प्रोफाइल समझ लेते हैं. एक कैंडिडेट है जो जिसका नाम है एक्स. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द कैंडिडेट. एक्स कैंडिडेट का नाम है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, यूपी से बिलोंग करता है, और उसका ऑल इंडिया रैंक है 145. ठीक है, अब इसका जो
प्रेफरेंस है वो बाद में देखते हैं, पहले मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूं कि जनरल सीट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की बात करते हैं, जनरल सीट्स एनएलएस बैंगलोर में 91 है, इसमें 2-4 सीट पीडब्ल्यूडी में कटेंगी, नालसर में 51 है। अगर हम क्यूमुलेटिव बात करते हैं तो टोटल 142 सीट्स आती हैं जनरल कैटेगरी की टॉप 2 नेशनल यूनिवर्सिटीज में, और ये स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का। और एक चीज आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस कि यूपी जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, वो स्टेट डोमिसाइल में जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन ऑफर नहीं करता है। मतलब अगर आरएमएल में भी एडमिशन चाहिए तो इस बच्चे को जनरल का ऑल इंडिया बेसिस पे ही आना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये बच्चा ऑल इंडिया बेसिस पे ही हर जगह कंसिडर हो रहा है, इसको डोमिसाइल का कोई फायदा नहीं है। Consider X having secured 145 rank and we know that top through. Now this kid in every way is dependent on 3 students to leave their choices or make their different choices only to get to NALSAR. इसको डेफिनेटली बैंगलोर नहीं होने वाला है। सिचुएशन देख लो, मान लो स्टूडेंट ने एनएलयू जोधपुर अगर टॉप पे डाल दिया, फॉर एग्जांपल एनएलएस बैंगलोर सेकंड पे, नालसार थर्ड पे और एनयूजेएस कलकत्ता पे, एंड दिस हैज हैपेंड अर्लियर। लोगों ने बहुत लोगों से बात किया, भोपाल ऊपर डाला और भोपाल पहुंच गए फर्स्ट लिस्ट में। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रेफरेंस बहुत ही सोच समझ के भरना है। तो मान लो इस कैंडिडेट ने एक्स ने एनएलयू जोधपुर टॉप पे डाला, फिर बैंगलोर डाला, फिर हैदराबाद डाला, फिर कोलकाता डाला, तो इसको क्या होगा, इसको एनएलयू जोधपुर एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि उसका फर्स्ट चॉइस, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्स्ट चॉइस पे जो टॉप रैंकर्स होंगे एनएलयू जोधपुर नहीं देंगे, वो बैंगलोर देंगे, हैदराबाद देंगे, कोलकाता देंगे, इसके बाद जोधपुर देंगे। बट चूंकि इसने डाल दिया है, इसका फर्स्ट चॉइस कंसिडर हो जाएगा, कोई कंपटीशन नहीं है। मान लो इसने बैंगलोर डाला फर्स्ट पोजीशन पे, जस्ट लाइक एनी अदर किड, NALSAR Hyderabad at second position, NUJS Kolkata at third position, NLU Jodhpur at fourth position. In this case, what will happen? The student will be allocated NUJS Kolkata unless 3 students make different decisions. अब वो मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको टेक्निकली सेकंड लिस्ट में अपग्रेड होगा टू हैदराबाद, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में ही मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि एनएलयू दिल्ली का भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करो कल या परसों आ जाएगा, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे टॉप रैंकर्स इन 141 जो है इसके ऊपर, उसमें से कुछ बच्चे निकल के चले जाएंगे एनएलयू दिल्ली। वो डिसाइड करेंगे कि मुझे कंसोर्शियम के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, एंड दिस विल हैपन। सो ऑफ कोर्स ये फर्स्ट लिस्ट में ही अपग्रेड हो जाएगा। मान लो अगर बाय एनी चांस नहीं होता है तो ऑफ कोर्स ये अपग्रेड होकर के सेकंड लिस्ट में कोलकाता से नालसर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो योर प्रेफरेंस मैटर्स अ लॉट, हाउ यू प्लेस योर प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि अपग्रेड अलाउड है, डाउनग्रेड अलाउड नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू डाउनग्रेड योर प्रेफरेंस इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस, सो इट इज ओनली अपग्रेड विच इज अलाउड, revealing the what you have been waiting for, the preference of the national law universities. Now there are 25-26 of them. Now first of course has to be Bangalore, second has to be NALSAR Hyderabad, third has to be NUJS Kolkata, fourth has to be Jodhpur, fifth has to be GNLU Gandhinagar, sixth has to be NLIU Bhopal. And a quick update, NLIU Bhopal will not be admitting any students for the cyber law program this year. इस साल admissions नहीं होंगे for the cyber law program which they introduced earlier. So BSc cyber law admissions will not happen this year. Okay, and then your Mumbai comes. These are your first 7 preferences in the very same order. Whatever your reason is, boss, don't change this. Unless you are from Telangana, you want Hyderabad on top, that's okay. Unless you are from Bengal, you want Kolkata, I'm still not okay, but if you want, you can do that. But please ensure your order remains this. Do not change. These are your best of the national universities other than Delhi. Top 7 अच्छे national universities हैं, इसमें आप कोई tampering नहीं करना. That is what my request to each one of you. ये tamper करोगे फिर बाद में regret मत करना लाइफ में कभी भी. तो don't tamper this. अब आते हैं मिडिल वाले एनएलयूज में। At 8 you have Raipur, one of the oldest national universities, followed by National University Cuttack at number 10, which is in Odisha. We have Rajiv Gandhi National University of Law Patiala. We have Ram Manohar Lohia National University at Lucknow. At number 12 you have Chanakya National University Patna. Now you must have seen on the consortium website the addition of IULR, India International University of Legal Education and Research, which is based out of Goa.
Now, please understand, Euler is the national university at Goa. Goa government will be promoting it as a national university for the state, but that's not the reason. I'm sure you have all the apprehensions about, or you may have apprehensions about Euler because you may not have researched much about it actually. I have been to campus, I have met the first two batches over there, and a lot of feedback is coming our way. But don't forget the fact it is the same body which has started Euler, which is Bar Council of India Trust. उसने start किया है, Bar Council of India Trust, BCI ने start किया है, and it is the BCI Trust which revolutionized the entire legal education in India by going ahead and establishing the first national university, Bangalore. So once again they are back into education, they are going into this, and this is where you can put ILR over here. So यहाँ पर आप definitely ILR ला सकते हो. Now, I'm sure the question would be, but what about the national university? There are so many national universities out there. NLUs तो सारे ही अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Please understand. Each of the NLUs are state university. मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, but please understand, you have to be careful. It's all about your career. तो don't just rush through कि सिर्फ national university है. कई सारे colleges ऐसे हैं. There are many more colleges in the country which are far better than some of the national universities that you must consider. So ILR comes over here if you are definitely taking that into consideration. उसको आप definitely यहाँ रखने की कोशिश करना, नीचे ले जाने की कोशिश मत करना, और at max यहाँ पे. मैंने पुराने national universities को अभी भी top पे रखा हुआ है. Of course, Ranchi and Kochi. Now here, based on your geography, you can take a call in दोनों में से. If you are from south, you may prefer taking Kochi and Visakhapatnam. If you are from north, maybe East India, prefer getting into National University Ranchi. That's how I would look at it actually. Okay? But I'm going back once again, no tampering here. This 7 should remain as it is. 8, 9, 10, 11, 12, we have seen that. ILR comes here at number 13, definitely for sure. You may have reasons. अगर तुम्हारे पास sufficient reasons हैं, do inquire with the college. You want to move it further, you do that. Okay. यहाँ पर make your choices. Again, I'm coming back. If you are from South India, decide between Kochi or Visakhapatnam, or you can definitely go ahead with Ranchi if you are from this part of the country. Then comes Maharashtra National University, Nagpur. Now, please understand, Nagpur has a wonderful program on adjudication. If you are really interested in judiciary and likewise services, then there is a program at Nagpur for which interviews will be conducted. It's not directly allocation. You will be allocated the program, but without the interview, you will not be getting into that batch. So, इसके लिए Nagpur अलग से notify करेगा, interview करेगा. Trichy, Aurangabad, Guwahati, Shimla, Sonipat, DNLU Jabalpur, Gujarat National University का जो off campus है सिलवासा में, Daman and Diu, and then Prayagraj starting this year, and finally we have Agartala. तो ILR मैंने यहाँ प्लेस किया है, बाकी ये सारे हैं. So this is your list of the national university should go into the preference. चाहे आपका रैंक कुछ भी हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा रैंक नीचे है, मैं नागपुर पहले डाल देता हूं, तो एलोकेशन नहीं होने वाला. पहले डिपेंडेंट हो अब बाकी सारे स्टूडेंट को. मान लो आपका रैंक है 500 एंड यू पुट मुंबई ऑन टॉप, बिलीविंग कि लास्ट ईयर तो 500 पे मुंबई मिल गया था. Please understand, you are dependent on what 499 students ahead of you do place the preferences. So even if you place, जरूरी नहीं है कि आपको national university मिल ही जाए. So don't act smart. Follow. We have the experience. We have been doing this since day 1, 2008. Just follow this. You'll never regret that. So that's all about the preference of NLUs. Of course, female students, good news for you. There are 12 national universities where you have horizontal reservation of seats, and beginning with National University Bangalore itself, having 30% seats reserved for female students across every category. And let me remind you, you are there for the remaining 70%. You will be competing with the boys for remaining 70%. And that's the reason many a times you'll find in Bangalore itself, the batch is almost 55-45% ratio. 45% female, 55% boys. So it's a huge advantage to you, and many congratulations for this. I think I may have this. Okay, coming back. Okay, NALSAR University of Law comes next. Another 30% reservation over here. NLIU Bhopal has a total of 15 seats reserved for female students in the BLLB category. Again, I'm telling you, cyber law हटा दिया गया है.
Gujarat National University, Gandhinagar, 30%. MNLU, Mumbai, 30% reservation. HNLU, Raipur, 30% with the reservation. Lucknow, NLU Lucknow has 20% seats reserved for female students. DSNLU has the seats reserved for female students, but for the domicile female students, those who belong to the state of Andhra Pradesh, उनके लिए 33% seat reserved है. MNLU Nagpur another 30%, MNLU Aurangabad 30%, DNLU Jabalpur 30%, and Rajendra Prasad National University Prayagraj, the newest one, will be going ahead with 20% reservation for the female students. Okay, so definitely a good opportunity for all my female students to get into a national law university. Moving on, NRI sponsored seats. तो मैं इस पे आता हूं. पहले ये समझ लो NRI sponsored seats का admission कैसे होता है. I'm sure you marked a yes in the question in the application form that you are seeking admission through NRI sponsored category as well. Please understand this. अगर आपने no किया था, if you had marked no, you would have not received your NRI sponsored rank. और अगर ये रैंक नहीं है, you cannot apply for this category of seats. The admission to the NRI sponsored seats are done directly by the respective national law universities. And these national law universities, somewhere on January and February, will notify the admission process, and they have a separate application. मतलब हर NLU जहां पे NRI sponsored seats available हैं, वो NLU, those NLUs offering NRI sponsored seats or NRI seats will be filling those seats separately. A separate application will come on their website, और आपको वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म फिल करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, and definitely it will be all dependent on your NRI sponsored rank, and further merit will play a role over here. For example, let's say there is one seat in NUJS Kolkata for NRI sponsored, and a candidate with a rank of 10, NRI sponsored rank 10 also applies for it, and a candidate with NRI sponsored rank of 12 also applied for it. Only this student will be offered admission, which means merit will play a role here as well. NRI sponsored seats के लिए भी merit basis पे admission होगा, but it will be based on NRI sponsored ranks. Now, generally, what are the documents you must be ready with? क्या documents चाहिए होंगे? First of all, document छोड़ो. You need to have a relative who is a non-resident Indian. You need a relative. It could be even your parents. You may not be an NRI, but your parents are an NRI, or your uncle, aunt, grandfather, grandmother. But you need to have a first degree or second degree relative. खून का संबंध होना जरूरी है. First degree or second degree relative to sponsor your education for 5 years. Please understand, the minimum fee in NRI sponsored seats is almost 5x of the general category fees in a national university. That's minimum I'm talking about. It could go up to 7x. In some of the NLUs, for the NRI sponsored seats, the fee per year is 12 lakhs to 13 lakhs per annum. 12 lakhs to 13 lakhs per annum. So please understand that. उसके अलावा रिलेटिव मिल गया तो उसके बाद क्या करना है, एक एफिडेविट चाहिए होगा फ्रॉम द रिलेटिव इन द फॉर्मेट व्हिच हैज बीन गिवन ऑन द एनएलयू वेबसाइट, letter from the embassy, declaration by candidate and candidate's parent and guardian, copy of the valid passport of the NRI relative who is sponsoring your education for the 5 years. तो ये documents चाहिए. Now, which are the national universities? There are 12 NLUs again which offer NRI sponsored seats. The top two, Bangalore and Hyderabad, do not have NRI sponsored seats. Okay, please remember, NLSIU Bangalore and NALSAR Hyderabad do not offer any NRI sponsored seats or even NRI seats. So the best choice is NUJS Kolkata, followed by Jodhpur, Bhopal, Gandhinagar, Mumbai, Raipur, Patiala, Lucknow, Kochi, Visakhapatnam, Trichy, and Shimla. So these are the NLUs where you will find the national, these are the NLUs which are offering the NRI sponsored seats. तो इनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा. Please keep check on the respective websites if you are applying for admission through the NRI sponsored seats. और इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है. अब चलते हैं प्रोसेस के ऊपर, इसको समझ लो बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एक छोटी सी गलती तुम्हारे कैंडिडेचर को खराब कर सकती है. वन सिंगल मिस्टेक एंड यू विल लूज योर कैंडिडेचर फॉर एडमिशन. सो ये 10 बजे स्टार्ट होना था, 4 बज के
अभी स्टार्ट हुआ है, बट 20th दिसंबर को क्लोज हो जाएगा at 10 PM. So registration process which has just started a short while ago will close on 20th December at 10 PM. तो जो भी करना है उसके पहले करना है. My suggestion would be try to finish it by 15th. 20th तक ले जाने की जरूरत ही क्या है, 15th तक कंप्लीट कर लो, ठीक है. 20th तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, उसके पहले कर सकते हो. फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको अपना एनएलयू प्रेफरेंस अपडेट करना होगा, आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी. नाउ व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड इनिशियली फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट? द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी इज rupees 30,000. For other category of students the counseling registration fee is rupees 20,000. ठीक है, तो ये रेडी रखो. ऑनलाइन पेमेंट करना है, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन में से ही हो सकता है थ्रू योर CLAT 2025 लॉगिन. देखो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना वो रिफंडेबल है, फुल रिफंडेबल है टू अ सर्टेन टाइम फ्रेम जो मैं अभी बताऊंगा. बट ये जरूरी, ये आपका पैसा वो रखेंगे नहीं. अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलोकेट होता है तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी विल बी एडजस्टेड टू योर ट्यूशन फी ऑफ दैट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. तो ये पैसा वो रख नहीं रहे, ये रिफंड कर देंगे अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी एलोकेट नहीं होता है. आपको मैंडेटरी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन इसके लिए प्रोवाइड करनी होगी कि इन फ्यूचर अगर कोई रिफंड चाहिए कंसोर्शियम से तो वो उस बैंक अकाउंट नंबर पे रिफंड करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. So the counseling process recap began at 4 PM today, a short while ago, will close on 20th December, and 26th the first allocation list will be announced. So how do you go and register? Simply log into your CLAT 2025 account. You'll see on top update NLU preference. Okay, so first of all you have to update your NLU preference, and then you'll be clicking on make button payment, which is your counseling registration fee payment. वो जो 30,000 rupees or 20,000 rupees depending on the category you'll pay over there. If you don't pay this amount, you'll not be considered for admission. Please understand this. So you have to mandatory pay this amount in this process itself, in the registration part itself. तो make payment करेंगे, payment successful हो जाने से पहले log out मत करना, payment successful हो जाने से पहले log out मत करना, and don't wait till the last moment. Even consortium is saying this. They won't be responsible for any technical glitches, bank glitches, whatever happens, even on their website, they won't be responsible. So try completing the process by maximum 15th of December itself. अब कंफर्मेशन फीस जो है ना, इसके बाद जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे कर दिया उसके बाद एक कंफर्मेशन फी पे करना होगा उनको जिनको एलोकेशन हो जाएगा. सो दोस कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, they will be required to pay a non-refundable confirmation fee of rupees 20,000. तो एक बार आपको नेशनल यूनिवर्सिटी एलोकेट हो गई तो आपको 20,000 रुपीस का कंफर्मेशन फी देना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो एडजस्टेबल टू द ट्यूशन फीस. ओके, सो टोटल अमाउंट कितना हो गया जिनको एलोकेट हो जाएगा? 50,000 हो गया इनिशियली. If you don't pay the confirmation fee, then you lose your candidature, you lose your admission. So even in first list, if you have been allocated a national university, but if you fail after the allocation this 20,000 rupees, तो आप admission process से बाहर कर दिए जाओगे. You will be exited from the admission process in that case. Okay, this 20,000 amount is non-refundable. Please remember this. Once you have been allocated a seat, there are three options you can exercise. Number one, you can go ahead freeze. Now, in what case you should freeze? You have been allocated your first preference, or maybe you are happy with the NLU allocated to you. For some reason, you don't want to change. तुम्हारा fifth preference तुम्हें allocate हो गया. You don't want to change. You are happy at this point of time कि नहीं मुझे ठीक है. So you can go ahead and freeze. So mostly when in the first preference, if your first preference has been allocated, anyways nothing else can happen. You can either exit, but you have to, or you can freeze. So freeze means I am happy with the allocation. Now I want to go ahead complete my process of admission. Okay. So ये freeze होता है सीट का. दूसरा होता है float option. Float option क्या होता है? You have not been allocated your first preference, but second, third, fourth, fifth कोई भी preference allocate हो गया है, and you know that vacancies come for reasons. Vacancies come, and you may have a good chance to upgrade your national university in the next list. तो 95 रैंक है. अगर 5 बच्चे चले गए नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली तो ऑफ कोर्स मुझे एनएलएस बैंगलोर मिल जाएगा.
अभी फिलहाल नालसार मिला हुआ है, बट मुझे एनएलएस बैंगलोर मिल जाएगा. So your first preference not allotted, but second, third, fourth, fifth onwards, any of the preference allotted, it is advised that you exercise float option. It is advised that you exercise float option. Float options mean upgrade. You are open for upgrade to a better preference which you had submitted to the consortium. ठीक है, देखो तुम अपना प्रेफरेंस के साथ जो भी करना है 20 दिसंबर तक कर सकते हो. वंस द विंडो क्लोज यू कैन नॉट चेंज योर प्रेफरेंस. तो बहुत ध्यान से भरना, जो मैंने बताया वही भरना. सो फ्लोट का मतलब होता है यू आर ओपन फॉर अपग्रेड. एंड थर्ड वन इज एग्जिट. फॉर सम रीजन at any point of time you do not want to take the admission, you have been allocated a national university, you don't want to take the admission, or you don't pay the confirmation fees, anyways you'll be exited from the entire process. Please understand this. एक बार एग्जिट हो गए तो फिर आपको फिफ्थ लिस्ट तक एडमिशन का कोई चांस नहीं होगा. You may participate in the spot round, but that's a lottery and that's generally for the lower ranked national university. ठीक है, अब कैलेंडर समझ लो. अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया एट 4 PM एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कैलेंडर शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया. 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा विंडो एट 10 PM. हमें आदत है ना 12 बजे रात तक सब कुछ करने का. 10 PM द विंडो विल गेट क्लोज. और मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्राई कंप्लीटिंग दिस बाय 15 December. Consortium will publish the first allotment list on 26th of December. 26th of December you'll get the first allotment list. You'll get to know whether you have been allotted a national university or not, or which national universities you have been allotted. At 10 AM the first counseling begins, the first round of counseling begins. Those students who have been allocated a national university in the first round of allotment, for which the list will be released on 26th December at 10 AM, will have time till 1 PM 4th of January 2025 to make the payment of the confirmation fee and to exercise the option of freeze float. Okay, so first है तो freeze हो गया, करना पड़ेगा. Second, third onwards preferences हैं, तो you can keep the option open by pressing the button of float. Okay, but you have to make that payment of the confirmation fee. 4th January तक आप ये काम कर सकते हो, but that till 1 PM only. Then they will publish a second allotment list, checking the vacancies. If there is any vacancy, the upgradation will first happen. तो जो पहले स्टूडेंट्स को allocate हुआ, पहले उनको अपग्रेड करेंगे. उसके बाद नए स्टूडेंट्स के लिए अगर जगह बनती है, if there are vacancies still remaining, then new students who have been kept in waiting, they will be added to the second allotment list. But in the second allotment list, first preference will go to the ones who have been allotted in the first list, an NLU, and they were seeking an upgrade. तो पहले upgrade किया जाएगा, और फिर भी वैकेंसी अगर किसी कैटेगरी में किसी NLU में रह जाती है, then the waitlisted candidates will move on. That's how it worked for the entire 5 list. सारे 5 लिस्ट के लिए ऐसे ही काम करेगा. 10th January, the second list will get published, and those students who have been allocated a national university, जो पहली बार जिनको second list में ही national university allocate हो रही है, उनके पास 16th January तक टाइम होगा to make the payment of the confirmation fee. ठीक है. Finally, third list will be published on 24th of January, and now these students who have been freshly allocated a national university in the third list, उनके पास समय होगा till 30th January to make the payment of the confirmation fee. And all the students who have been allocated national university in the first, second and third allocation list, जो तीनों लिस्ट हैं, उनमें जिन को national university have been allocated, they will have time till 14th May 2025 to make the remaining payment to the allotted national university. तो जो बैलेंस पेमेंट है फर्स्ट ईयर का, some lakhs of rupees, 2 लाख 2.5 लाख जो भी है, वो आपको पे करना होगा to the respective national university where you have been allocated, to which you have been allocated. Finally, the fourth list will come on 20th May, and those students who have been allocated seat in the fourth round, they will have time till 24th May to make the payment till 1 PM. Final list from the consortium will come on 29th May, and these students can make the payment till 1st June. For these students, they will have time till 10th of June 2025 to make the remaining payment to the national universities.
तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखना, टाइमलाइंस को फॉलो करना. ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज इवन इन द कोर्स ऑफ द प्रोसेस, तो डोंट हेजिटेट. बट ये प्रोसेस, ये टाइमलाइंस को बिल्कुल ध्यान में रखना, भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी. डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है फॉर एवरीवन ग्रेड 10 मार्क्स इज रिक्वायर्ड. तुम क्लास 10 का मार्कशीट तो सबको अपलोड करना ही करना है. रिमेंबर, मैंने डूज एंड डोंट सेशन में बात किया था. क्लैट 2025 एडमिट कार्ड, क्लैट 2025 एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय द इन्विजिलेटर. आई होप आप लोगों ने इन्विजिलेटर से साइन करा लिया था. ये भी अपलोड करना है. मैं बार बार बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस के लिए, तो वापस लेकर के आना. सो ग्रेड 10 का मार्कशीट, admit card. Those students who have completed class 12th in 2024 or earlier, means droppers, retakers, for them grade 12 mark sheet also needs to be uploaded. But those who are appearing for the board exams in 2025, for them this is not mandatory. Once the results will be announced, then you'll have to submit it quickly to the allotted national university. Character certificate from the education institution last attended. Transfer migration certificate only for those having gap year, those who completed their class 12th last year. Transfer migration certificate is not required for current batch of students, those who are in class 12. You need character certificate. So ask your school to issue you a character certificate immediately. कल जाकर के स्कूल में अप्लाई कर दो, क्योंकि स्कूल कई बार हफ्ता ले लेते हैं इसको रिलीज करने में. Get your character certificate from the school. For category students, caste certificate definitely required. For PWD, specially abled person, if you have applied under this category, PWD category certificate needs to be uploaded. Domicile certificate needs to be uploaded wherever applicable, and any other supporting documents to claim your seat for the category that you have applied. So maybe EWS certificate, if you have applied through EWS certificate, please remember EWS certificate should have been issued by on or after 1st April 2024. इससे पुराना EWS certificate नहीं चलेगा. ये इंपॉर्टेंट है ओबीसी के लिए भी और ईडब्ल्यूएस के भी. ये कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2024. इसके पहले का सर्टिफिकेट हो तो वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है. सो जिस भी कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी में अप्लाई किया है अदर देन जनरल कैटेगरी, वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है. ग्रेड 10 मार्कशीट अपलोड करना है. क्लास 12 जो क्लैट का एडमिट कार्ड है वो अपलोड करना है. कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है. और जो ड्रॉपर्स हैं, रीटेकर्स हैं, उनको 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है. ठीक है. तो ये स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज को ध्यान में रखो, डोंट फॉरगेट. और एनएलयू प्रेफरेंसेस बहुत ध्यान से भरना. रिफंड की बात करना जरूरी नहीं है इस समय, बट मैं बता देता हूं कि अगर तुम्हें एलोकेट हुआ है, बाय एनी चांस तुम्हें सीट एलोकेट नहीं होता है टिल द एंड ऑफ द 5th राउंड, देन पूरा पैसा वापस रिफंड कर देगा कंसोर्शियम. बाय चांस आपको सीट एलोकेट होता है, लोअर रैंक्स की बात कर रहा हूं, आपको सीट एलोकेट होता है, फ्लोट फ्रीज ऑप्शन जो भी आपने एक्सरसाइज कर लिया और बाद में आप एग्जिट करना चाहते हो, तो अगर एग्जिट आप 24th में 1st मई से पहले कर लेते हो, फर्स्ट 1 PM से पहले कर लेते हो 24th में, तो पूरा का पूरा 30,000 रिफंड हो जाएगा. और अगर बाद में करते हो तो 5,000 डिडक्ट करके पैसा रिफंड करेंगे वो लोग. So that's all about the counseling registration process. ठीक है. So that's all about it. So simple है. अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे प्रेफरेंसेस फिल करो. आप 20th तक चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर, बट मेरा सजेशन होगा जो मैंने बताया है बिल्कुल उसको फॉलो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो यूजुअली 25,000 रैंक तक लास्ट 2-3 सालों से देखा गया, 25,000 रैंक तक उन्होंने काउंसलिंग के लिए इनवाइट कर लिया है. बट ऑफ कोर्स सबको एडमिशन नहीं मिलने वाला, आपको पता है सीट्स कितनी है, उससे ऊपर थोड़ी जाती हैं, बट डेफिनेटली उस लेवल तक तो नहीं जाएगा. जो जनरल कैटेगरी सीट्स हैं ऑल इंडिया बेसिस पे यूजुअली 2000 के आसपास मैक्सिमम जाएंगी, 2000 और 2300 2400 मैक्सिमम जाएंगी. तो अगर आपका रैंक डेफिनेटली 5000 तक है तो डेफिनेटली अप्लाई करना, कोई चांसेस मत लेना. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. बाकी of course it's important that if you have been invited, do apply to them. Look at your chances. Usually 25,000 तक कॉल आ जाता है. और अगर कोई कैटेगरी हुआ तो वो अलग बात है, बट सीट्स हर कैटेगरी में काफी लिमिटेड है. वो डिस्प्ले होना चालू हो गया है आपके लॉगिन अकाउंट पे. यू कैन सी हाउ यू आर पोजिशन, डोमिसाइल, category, how many seats are there, what's your rank. You can definitely take a call. That's important. Okay, so that's what it is all about, the NLU preference and the admission counseling process. Do not take too much of time, don't spend too much of time, but
we do it very diligently, do it very carefully, very very important. पैसा भी है, effort भी है, but admission के बारे में बात कर रहे हैं, this is very very important. ठीक है. So with this we come to an end of this session, and of course it's time to wait for the ALET result. Hopefully कल आ जाना चाहिए रात को, या वेडनेसडे को ALET का भी रिजल्ट आ जाएगा. तो इसको फॉर्म फिल करके रेडी रखो. अगर NLU दिल्ली आता है तो who knows, you might be willing to go there as well actually. So might be. So अभी don't take any call, definitely do that. Okay. Yeah. चलो ठीक है. So we close the session over here. Thank you so much for joining in. All the best. Go ahead, complete your process.